डायमेंशन डाल दीजिए हेडिंग। बेटा नंबर 1 to check the consistency of a given relation. To check the consistency of a given relation, बच्चों, by method of dimension we can check whether given physical equation is correct or wrong. Correct means consistent, wrong means inconsistent. So dear students, by method of dimension we can check whether the given equation is correct or it is incorrect. See the example. By method of dimensions check whether following equation is correct or incorrect. V square is equal to U square plus twice of AS. S is equal to UT square plus what? Half AT square. Dear students, you are given these two equations. पहले पढ़ चुके आप 9th क्लास में, तो मुझे ये पता करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से सही है या गलत है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AS। कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की है तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। वेलोसिटी की डायमेंशन कल आपको पढ़ा दी गई है, LT पावर -1 स्क्वायर, LT पावर -1 स्क्वायर। बॉयज और गर्ल्स बेटा कांस्टेंट और नंबर हैव नो डायमेंशन। अगर कोई नंबर है या कांस्टेंट है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। A for acceleration we know LT power -2, S for distance L. So you can write LT power -2 is equal to LT power -2 plus L square T power -2। बेटा जब स्क्वायर करेंगे when we shall square it will come L square T power -2, L square T power -2, LT power -2 into L, ये भी क्या आ गया बेटा L square T power -2। Please see all the three brackets have same dimension, so we shall write dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. Therefore equation is consistent. Consistent means correct. So this equation is correct. Now see the second equation बच्चों, S is equal to UT plus half AT square. Again writing dimension of boys or girls both sides, distance dimension L, speed LT power -1, T for time बच्चों T square plus no dimension for half A LT power -2 T square, dimension of S is L, dimension of U is LT power -1 T square plus
dimension for acceleration L_t power minus 2 into what? T square. So this is L. This will come out L. Excuse sir, yes में हाँ half बिल्कुल बोलिए बेटा. half AT square है ना. Half has no dimension. The constant 1, 2, 3 numbers, constants जैसे like pi which has no unit, no dimension बेटा. Plus L. Here it will come L. LT power mass into T square, that will come LT power minus 2 T square. So you are going to see this and this are same, but this is different. So we shall write dimension of right hand side is not equal to dimension of left hand side. So equation is बच्चों what? Inconsistent. Inconsistent means incorrect. So by method of dimension बच्चों you can find out whether the given equation is correct or wrong. बाय द वे कभी न्यूमेरिकल करते हुए हम कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं और फार्मूले में हमें कंफ्यूजन हो गया कि ये फार्मूला सही है या गलत है, तो बाय मेथड ऑफ डायमेंशन यू कैन चेक वेदर द फार्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग बेटा. एग्जाम्पल बाय मेथड ऑफ डायमेंशन check the consistency of following equations. Number 1, V is equal to U plus AT. Number 2, E is equal to H nu. Number 3, F is equal to mv square upon R, where symbols have their students usual meaning. बड़ा 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है. V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू नो दिस इक्वेशन. You know this equation beta V is equal to U plus AT. That is V is equal to velocity U velocity A acceleration T time. E is equal to H nu. Here E क्या है बच्चों? Energy. H I have taught you Planck's constant. Nu क्या है बेटा आपकी? Frequency. Here M is mass. V is again velocity, and what is R? R is radius and F is force. So these are the 3 equations. You will practice yourself whether these equations are correct or these equations are wrong. Copy it.